going to change the future of health, fitness and using your body to the optimum. ये एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको डिकोड करने वाले हैं. लेकिन इसके पहले we have a small visual treat for you. My name is Glenn Saldana and I'll be taking you through this afternoon. We're going to have a session of moderation where we're going to discuss this whole concept of the biohacker. Welcome, Anna. Thank you so much for joining us. All right, can we please have the AB with a small token of appreciation on behalf of the biohacker. Thank you so much. All right, next up is somebody I consider the OG action star in our industry. Now, let me put it this way. This Balwan is sabke dil ki dhadkan. All right, his charisma and style goes beyond the border. और सब इसी हेरा फेरी में लगे हुए हैं कि बॉस इनके स्टाइल और स्वैग का राज क्या है. सब दीवाने हुए पागल इनको देखकर. When it comes to style, swag and working on himself, he says मैं हूं ना. He did a film called Arn Men at Work, but I'll tell you what, Anna is always at work. Ladies and gentlemen, the man, the OG action star of India, Mr. Suniel Shetty. Give him a big round of applause, please. Thank you very much, sir. We're going to have a small Q&A session, a few questions biohacker ke regarding, और उसके बाद I'll open the question and answer sessions from the press. So ladies and gentlemen, we're going to just do this right now. You can have your photo op. So biohacking is basically जो हम changing the environment, हमारा बाहर का और अंदर का environment और biological change लाने के लिए इसको बोलते हैं biohacking. Simple तरीका है ये अपने आप पर काम करने का. That's called biohacking. Right, right. So जितना हम अंदर देख पाएंगे, जो हमने पहले भी बताया है कि we have to view inside क्या प्रॉब्लम्स है हमारे and then work on it. That's called biohacking. Do it yourself. दूसरा कोई नहीं, हमें खुद करना है. That's called biohacking. बचपन में इनको बहुत बोला गया अपने गिरेबान में झांक कर देखो और इसीलिए आज तक हैकिंग के बारे में सुना. Biohacking is a very interesting concept. So we are going to get to know more about biohacking. But Anna, I want to ask you one very legit, honest question. You have discovered biohacking before biohacking came. You just went on to this. For you, fitness and good looks have been synonymous, working together. How have you managed? What has been that one thing that you have followed religiously? I think a consistent lifestyle. You know, anything that the world believes gave them a high is something I didn't believe gave me a high. Whether it was alcohol, whether it was tobacco, whether it was aerated drinks or anything unhealthy. For me, everything was about me feeling good, preventive wellness, staying away from medicine, staying away from things and enjoying the simple things in life. Nature, sport, team sport, relationship, friendship. This is all biohacking. According to me, this is all biohacking and that's how it's coming back to you. कि अपने आप को सुधारो. जब हम बोलते हैं कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, उनके कंधे पे इतने बुक्स और शोल्डर्स पे इतने बुक्स मत डालो. दैट इज़ बायोहैकिंग अकॉर्डिंग टू मी. ताकि बच्चे अपने एनवायरनमेंट में बड़े हो और जब अपने एनवायरनमेंट और अपने दोस्तों के साथ और खुशियों के साथ बढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं शुरुआत है बायोहैकिंग की. तो शुरुआत वहाँ से होती है. एनवायरनमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ऑफ कोर्स इसको अभी एक नया फॉर्म दिया गया है इंटरनल इश्यूज को समझने का. साइंस हैज गॉट इन्वॉल्व टू टेल यू अबाउट इट, हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी. आई थिंक बायोहैकिंग अगर कहीं शुरू हुआ तो इंडिया में शुरू हुआ होगा. वाओ, वेरी वेल सेड, वेरी वेल पुट. योग हो, आयुर्वेद हो, हमारे रिलीजन्स हो, हमारा कल्चर हो, हमारी डाइवर्सिटी हो, it is India. India is the epicenter of anything and everything good, and biohacking is one of that. And I'm glad that Lalit jumped into it, and I got an opportunity to jump in with him. We will come to a very important question that I want to ask you, but Mr. Dharmani, I have to ask you this. हर कंपनी का एक विजन होता है. Now with the biohacker, like Anna mentioned, it is internal. The change has to be inward and then वो output outward दिखेगा. Generally हम क्या करते हैं, outward to inward change लाने की कोशिश करते हैं. So what is your vision with this concept? क्या है आपका vision? So basically मैंने खुद करके देखा है. I have just worked on myself since last 5 years and I have seen that कि I can really change my biology, which is going to hamper in future because the things that कि situations तो आएगी, everything will come which will deteriorate our
health. So on that part of it, I took a charge of myself and I thought कि let's create a platform for each and every person. किसी को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, not necessary to any particular tribe, but then each and every person can look into inside there and change the biology. Well, I think that's so important because generally हम quick fixes or solutions ढूंढते हैं. What is this, a 3-month body, or let's just fix this temporarily for a vacation or for a शादी है घर में तो मैं उसे change करना चाहता हूँ. Not like what you all both are mentioning is long term. It's a process. It is not a destination. एक journey सी है. So I want to ask you, a lot of actors and stars invest in supplements in gyms and all, which is a legit thing because if you're into the fitness fraternity. लेकिन आपके लिए एक बहुत ही हटके investment है when it comes to the biohacker, and you've also happened to mention that it's one of the wisest investments you've made. Could you throw some light on that? Yeah, and we have a plan for it. I'm excited that somebody's taken the lead. देखिए हमेशा होता है कि एक्टर करना सबको चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग. जब तक मैनेजमेंट सही नहीं हो और एक एक्सपर्ट उस चीज़ में नहीं हो, जी, आप अपने एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज उनको दे सकते हैं, लेकिन फिजिकली चलाना उनका काम है. जी. एंड आई थिंक दैट्स वेयर जब मैं ललित से मिला, आई नो ललित फॉर अ लॉन्ग टाइम, और 5 साल से जब इस पर वो वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी जर्नी भी यही रही है. लोग आज बात कर रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए, लेकिन आज साइंस के जुड़ने से it is proof that you can take care of your internal systems by just being yourself, by just doing the simple things, staying away from allopathy. तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शुरुआत है. I mean, I want to get into it, I want to deep dive into it, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा चाहा कि कुछ वापस दूँ. I think this health is something that I can give back. So the idea is कि ये एक क्लिनिक है, मैं मानता हूँ ये हमारी बायो हैकिंग की क्लिनिक है. बायो हैकिंग का एक सेंटर होगा और फिर बायो हैकिंग की एक डेस्टिनेशन होगी. मैंने कभी अपने प्लान्स के बारे में बात नहीं किया हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव पहले डिलीवर करते हैं, चली तो फिर बात करते हैं. लेकिन यहाँ our plans are ready. Probably the next one would be a 15,000-20,000 square feet setup. Wow. Because biohacking is not just about machines, it's about mental fitness, about creating the atmosphere, creating nature around you. क्योंकि जब वो डोपामिन बाहर निकलता है, खुशी की हैप्पी डोपामिन जो आपने सुबह कहा, उससे सब बदलाव आता है. मेरे लिए तो एक बच्चे को भी, अगर मैं हमेशा कहता हूँ 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को आप ड्रिबलिंग सिखाओ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाएगा, जो आप अभी ढूंढ रहे थे. कि यार मैं समझता हूँ आप में ये नहीं है, लेकिन वहां से शुरू होता है. बच्चा बॉल ऐसे पकड़ लेता है और उसमें कॉन्फिडेंस उतनी बढ़ती है, ना कि ढूंढता है बॉल के लिए. तो ये छोटी छोटी चीजें शुरुआत वहां से होनी चाहिए. एंड यू कैन बी अ बायो हैकर योरसेल्फ. तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंटर्स नहीं होंगे, लेकिन वो नॉलेज भी दिया जाएगा. सिर्फ उनके लिए नहीं जो हमारे सेंटर्स में आएंगे, लेकिन through the medium of social media and everything, जो यहाँ नहीं भी आ सकते, they should gain for it. So there are big plans, and this is my ultimate dream कि एक 10-15 एकड़ का एक सेटअप हो जहाँ वो बायो हैकिंग सेंटर हो, जहाँ लोग जाके कुछ दिनों को लेके अपने आप को बदल सके. The beauty is that both of you all are leading with example, in the sense you all want to bring about a change. That's the ultimate motive. So you were saying something. So also biohacking is also an use of science and technology wherein we try to work on ourselves. Similarly, there's a science between me and Suniel sir. Science is God's willing to be together and create a platform for each and every person in India to experience these services. So that's the main science, the God's science, is that we both are together. That's very. And without him, I don't think so I'll be able to achieve. But then he's got the motivation behind. He just pushed me every now I meet him and said कि क्या कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है. So that's what we have been working on it since almost 3-4 years down the line, and today we are here sitting together on this platform and giving it to the public. But it also intrigues me, not just in capacity of a host, but genuinely I'm asking this question on behalf of everybody. We're all in the media and press. We all have crazy hours of working. And as Gen Zs and millennials, I come from a millennial generation where one common problem I've heard, I'm into fitness, so I play sports, so I know I've lived an active life. But I know a couple of my friends would always say, yaar,
यार थक गए। मैं बोला क्या किया तुमने? बोला कुछ नहीं यार, पता नहीं, बस थक गए। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट वी ऑल फेस ऑल द टाइम, यार थक गए बिना कुछ काम किए। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेंटल थकान है जी, मेंटली आप थके हुए हो इसलिए आप, लेकिन Physically manifest हो रहा है। अगर आप एक रूटीन डालोगे अपनी जिंदगी में, रूटीन कोई कुछ भी हो, आप ब्रश करते हो, सुबह Right. उठ के नहाते ही हो, तो वैसे ही आप रूटीन डाल दीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। एंड गेट Right. इनटू अ स्पेस वेयर यू आर हैप्पी। आई मीन मैंने आई थिंक 8 साल 10 साल पहले ही छोड़ दिया था कि यार फ्राइडे वाइडे आता रहेगा, यू नो इट्स नॉट वर्थ क्राइंग एंड क्रिबिंग अबाउट। 100 फिल्में तो कर ली मैंने, 10 फिल्में करके लोग घर चले गए, मैं क्यों नाराज हूँ? एंड आई थिंक दैट मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चेंज्ड एवरीथिंग मी। कोई मुझे दुख पहुंचाता है तो मुझे पहले हफ्ते भर 10 दिन मुझे बहुत खराब लगता था। उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो 10 दिन का है, अगर मैं इस वक्त को कम कर दूं फिर क्या होगा? कम होते गया, और आज ऐसा वक्त है कि बुरा लगता है, उसके बाद मैं सोचता हूँ ठीक है यार कल खत्म हो जाएगा, एंड खत्म होता ही है। आई थिंक वी नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, वरना साइंस या कुछ भी काम नहीं करेगा। यू बायोहैक्ड। Yeah, you biohack that mind of yours to tell him कि be there and focus on the good things। यार अगर मुझ में आप में मुझे अगर बुराइयां दिखाई देगी तो मैं अच्छाइयां कुछ लेकर ही नहीं जाऊंगा। तो लेकिन अगर अच्छाई दिखाई दे तो मुझे सब में कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड दैट्स हाउ, गलतियां मुझसे बहुत हुई है मेरे एज पे, मैंने बहुत सारी चीज़ें की होगी जो गलत होगा, लेकिन उस गलत से सीख कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एंड आई थिंक इफ आई कैन इम्पार्ट दैट नॉलेज टू पीपल कि बी हैप्पी, मेक फ्रेंड्स, आई थिंक एवरीथिंग फॉल्स इनटू फ्रेंड। इसलिए ग्रुप्स, फ्रेंड्स, ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, वो एम्बियंस को देखना बहुत ज़रूरी है। वो 3 साल पैंडेमिक से जो अब हम गुजरे जी, तो कभी कभार तो ऐसे लगता था कि एक दूसरे की जान ले लेंगे घर में। यू नो इट्स बिकॉज ऑफ द मोनोटनी। वो मोनोटनी को तोड़ना बहुत जरूरी है लाइफ में। I think a sense of community, and that's what you're trying to also build with the biohacker, like a sense of community where people can understand, Mr. Dharmani, ki internally how can you optimize your performance, how can you learn certain things about your body, जो बहुत essential है। And today's day and age, I think every Gen Z, millennial, and every adult wants to optimize their performance at work, wants to be at their best, and ensure that there's balance between health, money, and everything else. So, can biohacker help us with all of those? Get our answers? Yeah, so the biohacker is a facility or a center or maybe a clinic as per what we have described here. So it's there a platform for each and everyone to come and experience those therapies, how to enhance our performance, how to enhance our cognitive health. दिमाग का जो हम सोचते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी नहीं है, so we able to give you the natural enhancement जो आपका cognitive health strong करेगा, and you able to bear the stress, bear the situations. That is where we work. We have the entire facilities wherein we have number of facilities and number of services जहाँ पे उनका हम ये उसके ऊपर हम ध्यान दे के we can make them come out of